Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today in this video I'll be discussing my paper of stylistics. So basically I did make a short of this paper, but because many of the people were not able to read my handwriting, so I decided to make another video on this. This video I'll be reading what I wrote in the paper, so it will be easy for a lot of you people who tried to study my short. So stylistics, I had a question in my paper, define 5 types of stylistics. So I started with the definition and then the types. So starting with the definition, stylistics, the branch of applied linguistics concerned with the linguistics rules on literature. Literature deals with text and data. There are 5 types of stylistics which are as following. स्टाइलिस्टिक्स वो एक ऐसी ब्रांच है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की जो कि इट डील्स विद बोथ विद द लिटरेचर एंड द लिंग्विस्टिक्स. हमारे पास जितने भी ऐसे सिनेरियोज होते हैं लिटरेचर के, एनालाइजिंग द एप्लीकेशंस और द थ्रेटनिंग नोट्स और एनीथिंग दैट डील्स विद द टेक्स्ट इटसेल्फ, तो उस पे हम लोग स्टाइलिस्टिक्स अप्लाई करते हैं. नाउ हियर आर द टाइप्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स. There are 5 types: reader response stylistics, effective stylistics, pedagogical stylistics, pragmatic stylistics, and forensic stylistics. So let's start with the first one, reader response stylistics. In reader response stylistics, only the reader and the text is concerned. अभी ऐसा है ना कि इससे पहले हमने क्रिटिसिज्म में पढ़ा था न्यू क्रिटिसिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म. Talking about Russian formalism and new criticism, तो वो जो है वो टेक्स्ट के आउटसाइड से मटेरियल नहीं लेते थे. जैसे कि जिस क्रिटिकल एनालिसिस हम लोग करते थे, people of that time when new criticism and Russian formalism was involved a theory, तो इसमें हम लोग टेक्स्ट के बाहर से कुछ भी नहीं लेते थे. फॉर एग्जांपल ऑथर्स बायोग्राफी और टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ दैट टाइम, व्हाट इफ रोमांटिक एरा, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उन्होंने लिखा था द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस नाउ. नॉट डीलिंग विद द ऑथर्स बायोग्राफी और इवन द सर्टेन एज दैट इन्फ्लिक्ट्स ऑन द राइटर्स टेक्स्ट और दी वर्क. तो इस तरह न्यू क्रिटिसिज्म एंड रशियन फॉर्मलिज्म में हम ये नहीं डालते थे थिंग्स connected from outside the text. While talking about reader response stylistics, so reader response stylistics में जैसे कि ये भी इसी तरह था. only the reader's point of view was connected with the text and the analysis was made on it. Here the sole theme was of the readers, what reader thought. Now इधर एक example है, in new criticism and Russian formalism, it deals with the text only, nothing from the outside is added. Similarly, in reader response stylistics, the reader's view and analysis is concerned. So the reader's view and analysis is concerned. In this approach, the reader is the dominant and enjoys being the theme of it. Effective stylistics, अभी नाम से ही पता लगता है there are two kind of effect. ठीक है, एक ए से होता है और एक ई से होता है. ई जो है नाउन है और ए जो है it's a verb. Effective stylistics. Okay, this kind of stylistics deals with emotion and feelings. Any literary piece of text produces catharsis on the part of the audience is considered to be effective stylistics. अभी बहुत सारी चीज़ें, हम लोग बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ देखते हैं, कभी कभी पोम्स पढ़ते हैं जो कि एलेजीज़ होती हैं, किसी के मरने पे लिखी जाती हैं, तो वो हमारे ऑडियंस के पार्ट पे कैथारसिस प्रोड्यूस करता है. हम लोग कोई ऐसे मूवी देख लेते हैं जो कि इमोशनल होती है और फिर हम खफा फील करते हैं, रोते हैं, मोस्टली पीपल क्राई, तो वो इट प्रोड्यूसेस कैथारसिस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस. कैथारसिस का मतलब है प्योरिफिकेशन. आप लोग एक चीज़ से सबक सीखते हो. अच्छा, हाउ अ सर्टेन टेक्स्ट अफेक्ट्स द ऑडियंस एंड अ रीडर साइकोलॉजिकली. तो इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स में हमें साइकोलॉजिकली जो हमें अफेक्ट करता है उसको इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं. दिस टाइप ऑफ स्टाइलिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ लैंग्वेज, साइकोलॉजी एंड माइंड. नाउ लैंग्वेज और माइंड को मिला के हमारे पास साइको लिंग्विस्टिक्स भी बनता है, विच वी इवन स्टडी इज इन लिंग्विस्टिक्स. देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स.
नाइटिंगेल एंड द रोज इज़ वन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी बाय ऑस्कर वाइल्ड। इसने ऐसा शॉर्ट स्टोरी लिखी जो कि इट अराइजेस पिटी एंड फियर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस। देयर इज़ अनदर ड्रामा इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। इडिपस रेक्स में इडिपस कॉम्प्लेक्स बताया गया है, जैसे कि एक छोटा बच्चा कैसे अपने मदर से अट्रैक्ट होता है। इसमें दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, लेकिन इडिपस रेक्स में इडिपस कॉम्प्लेक्स बताया गया है। इट अराइजेस पिटी एंड फियर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस। जैसे कि एक सबक हमें मिलता है साइकोलॉजिकली। हेमलेट अगेन, इट्स अ ट्रैजिक प्ले जिसमें एक जो लड़का होता है उसमें भी ये इडिपस कॉम्प्लेक्स बताया गया है। ही गेट्स अट्रैक्टेड towards his mother. There are other common themes as procrastination, soliloquies, but here we are discussing the language and mind plus psychology, the effective stylistics. Then we have 12th Night, उसमें भी हैं कुछ ऐसे themes, rape of the lock, paradise lost. इस सब में हमें effective stylistics मिलते हैं. These are the literary pieces have tragedy, मतलब tragic flaw होता है protagonist में, hero में. Now here is a quote or a saying, tragedy brings sorrow, which evokes pity, fear and catharsis on the part of the audience. ट्रेजेडी जब भी किसी के साथ होती है, जैसे कि एक प्ले है, ड्रामा है, नावल है, उसमें ट्रेजिक हीरो होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, दैट ब्रिंग्स सॉरो इन दी नावल, या तो सैड एंडिंग होती है वट एवर, बट इट क्रिएट्स कैथारसिस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस। जैसे कि हमारे पास एक सीरीज़ है पर्ज की, पर्ज एक मूवी का नाम है या सीरीज़ कह लें, इसके 3 4 5 6 पार्ट्स हैं। इसमें प्योरिफिकेशन बताई हुई है। इट्स आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश मैन, जिसमें एक ईयर में एक डे होता है जिसमें बाहर, घर से बाहर जितने भी लोग होते हैं, दे स्लॉटर देम डाउन, जिसमें किसी का भी नहीं पूछा जाता कि आप कौन हो या आप एट्सेट्रा वट एवर। तो ये एक मूवी है जिसमें पर्जिंग बताई हुई है, प्योरिफिकेशन बताई हुई है। जितने भी इंसान खफा होते हैं इन दी होल ईयर, वो इस डे के लिए वेट करते हैं कि वो अपना सारा गुस्सा निकाल सके। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल मूवी. Okay, another we have pedagogical stylistics. This type of stylistics deals with the teaching method of teachers for students, enabling them to learn how to write and speak. पेडागोजिकल स्टाइलिस्टिक्स में ऐसा होता है कि टीचर्स को टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं कि आप लोग स्टूडेंट्स को कैसे उनकी मेंटल लेवल इन्हांस करोगे कि वो कैसे स्टडी कर सकें. Example, in the classes of or the sessions of B.Ed, M.Ed, if teachers knows how to tackle students, give them the tips and tricks how to learn and to write. तो इसमें ये होता है. Explanation. As we study pedagogical stylistics under the linguistics, so in order to go with this field, it is essential to make students learn how grammar acts, how sentences are formed, how lex is suitably placed in a given expression or a sentence. Full stop. Now hold on. Lexis का मतलब है words जैसे कि synonyms, antonyms हैं, वो आगे अभी मैं बताऊंगी कि वो क्या होते हैं. Okay, why synonyms use choice of words. कोई ऐसे choice हैं आप लोगों के पास, जैसे कि synonyms तो ऐसे words which are interchangeably used in a given context. Context पे बात आती है कि आप लोगों का कौन सा context चल रहा है, तो उसके लिहाज से आप लोग choice of words use करोगे. जैसे कि एक सेंटेंस है, my shoulders are wide and the road is broad. So now this statement is wrong because shoulders के लिए broad use होता है and road के लिए wide use होता है. Now अब ये wide और broad synonyms हैं, but इधर वही बात आती है, it depends on the context. So the speech sounds हमारे पास एक type of linguistics है. It is a category. Phonology and phonetics, it deals with the pronunciation of the words and even the alphabets. तो इस तरह it deals with it. It enables to learn like how to spell a certain word. जैसे कि subtle है तो the word subtle के spelling SUBTLE है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आता. For example, there is a word receipt, तो receipt RECEIPT है, but because कुछ अल्फ़ाबेट्स बिकॉज दैट आर साइलेंट, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, एंड दे produces the sound as a receipt or whatever, so it is basically receipt. एक और word है debt,
तो इसके स्पेलिंग्स हैं DEBT, तो लोग कहते हैं डेप्थ और वट एवर, बट द ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ डेट। तो पेडागोजिकल में हमें ये भी सिखाया जाता है हाउ टू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड एंड द साउंड ऑफ इट। Talking about semantics and pragmatics, so semantics it deals with the literal meaning and pragmatics deals with the intended meaning or the hidden meaning of a particular sentence or an utterance. All these elements of linguistics makes the learner or the student proficient in a particular language. अब एक इंग्लिश लैंग्वेज में हमें कुछ वर्ड्स नहीं आते, हाउ टू प्रोनाउंस दैट, तो हमें फिर हम लोग प्रोफिशेंसी नहीं गेन कर सकते उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में. Further, we have pragmatic stylistics. So, pragmatics is defined as the meaning of a sentence, text not taken literally. It is considered to be the intended meaning or the hidden meaning. Examples: what time is it? Asked by a teacher from a student. So, the pragmatics of the sentence is that the student came late to the class and his response should be I missed the track of time, instead of telling the teacher the exact time by looking at his or her watch. So, pragmatic stylistics is when the writer intends to write a different meaning of the text but expression used are different. And similarly, most readers find it difficult while reading such text or any English novels. बिकॉज इंग्लिश नॉवेल्स में क्या होता है कि मोस्टली जो इंग्लिश राइटर्स हैं वो बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट प्रोड्यूस करते हैं, बट उनके वर्ड्स टोटली डिफरेंट होते हैं कॉन्टेक्स्ट से, उनका मीनिंग डिफरेंट होता है लेकिन वर्ड्स कुछ और कह रहे होते हैं. इस तरह हमारे पास कुछ नॉवेल्स हैं जैसे कि प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चॉसर, Gulliver's Travel by Jonathan Swift, Animal Farm by जॉर्ज ऑरवेल, और 1984 भी है जॉर्ज ऑरवेल पे जिसके कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट हैं. Coming back to the topic, the description of each character in the novel is opposite to what really is a character. The contrary explanation of a text or character is when a hidden message or a message is delivered, meaning or a message is delivered. अब इस prologue to the Canterbury Tales में every character is defined as very trustworthy, honest, and like such words are used in his or her character descriptions. But what happens that in prologue to the Canterbury Tales, the description of a nun character has been explained thoroughly एंड द वाइफ ऑफ बैथ. सो द नन जो होता है वो तो प्रीस्ट या चर्च में इस तरह की वुमेन्स होती हैं जो बच्चों की ख्याल रखती हैं या वट एवर, तो उसको बहुत ऐसे बताया हुआ है कि बहुत अच्छी है, ये है वो है, बट एक्चुअली उस टाइम में क्या होता है कि एवरी कैरेक्टर इज़ वेरी करप्ट. लेकिन क्योंकि उस टाइम में गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी और बहुत स्ट्रिक्ट था, ऐसे डबल मीनिंग नहीं लिख सकते थे, तो इसीलिए एक ही मीनिंग लिखा गया. बट क्योंकि उस टाइम वो टाइम ऐसे ही करप्ट था तो लोगों को पता लगा कि ओके डबल मीनिंग इज़ प्रेजेंट इन दी नॉवल और अ गिवन टेक्स्ट, तो इस तरह से हार्श रिएक्शंस आए थे. Talking about forensic stylistics, so forensic stylistics deals with the criminology, the abduction cases, rape cases, threat calls, emails, voicemails, voice recordings, memos, and letters. In a threat letter, it is investigated through grammatical structure, lexicon matlab words, way of communication, graphology, semantics, pragmatics, and how basically the words are arranged in a particular text. तो forensic stylistics में ये होता है कि जब कोई भी abduction cases में आता है कोई threatening note या call या कुछ भी, तो वो record किया जाता है. If you have ever been through such and such novel, short story, or even in the dramas, it is evidently shown कि कोई केस होता है और उसके लिए threatening call आती है कि we need this much amount of money, रैंसम के नोट्स आते हैं, तो उस नोट्स को इनके हाईली एनालाइज करते हैं थ्रू स्टाइलिस्टिशियंस एंड उसका फिर मीनिंग निकाला जाता है कि ये किस किस गैंग से बिलोंग करते हैं, सच एंड सच पीपल, एंड हाउ टू कैच देम ईजीली. तो फॉरेंसिक स्टाइलिस्टिक्स इसलिए यूज़ होता है. अच्छा, इधर मुझसे क्योंकि पेपर में हाफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक्स रह गया था, तो देन आई रोट इट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. सो pragmatic stylistics continuation ये है कि this type consists of SAT theory. SAT क्या होता है? स्पीच एक्ट थ्योरी. इसमें तीन टाइप्स आते हैं, locutionary, illocutionary and perlocutionary. सो टॉकिंग अबाउट locutionary, तो जिस तरह के वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं उस मतलब जो भी बोला जाता है वेदर इन रिटन और स्पोकन फॉर्म,
वो एक्शन होता है, ठीक है। इलोक्यूशनरी में वो होता है द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेड बाय द स्पीकर, जो जिसने बोला होता है उसका क्या मीनिंग है। एंड टॉकिंग अबाउट प्रोलोक्यूशनरी एक्ट, तो ये वो होता है जो कि इंटेंडेड मीनिंग हेयरर ने या इंटरलिक्यूटर ने गेन किया होता है, इसको कहते हैं कि इंटेंडेड मीनिंग और द हिडन मीनिंग। नाउ वी हैव एन एग्जांपल। लिक्यूशनरी है कि आई एम थर्स्टी, नाउ अ पर्सन सेड आई एम थर्स्टी, तो इलोक्यूशनरी है कि द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पर्सन, द लिटरल मीनिंग और सेमेंटिकली कि स्पीकर ने क्या बोला है, जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो परलोक्यूशनरी क्या हुआ, व्हाट इफ़ बहुत गर्मी है एंड क्योंकि मेहमान आए हैं तो आप लोग कोई ग्लास ऑफ जूस बना के दे दोगे। तो ये परलोक्यूशनरी है जो कि आपने, इंटरलिक्यूटर ने और हेयरर ने जो गेन किया है उस मैसेज से, और द सेइंग और द अटरेंस ऑफ अ सेंटेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेचर एंड गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले डेफिनेटली यू कैन नॉट स्टार्ट योर क्वेश्चन इसी तरह से, तो यू पीपल हैव टू गिव डेफिनेशंस फर्स्ट। स्टाइलिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कंसर्न विद द लिंग्विस्टिक रूल्स ऑन लिटरेचर, ये एक पहला, और यू कैन से इट इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो कि it deals with linguistics and literature on the same hand. Stylistics is the study of devices in a literary text like syntactic patterns and rhetorical figures. Syntax क्या होता है? Syntax dealing with the syntax, and rhetorics is dealing with the how the utterances has been uttered. Stylistic does not deal with what and how but why questions are concerned. Simply why questions are concerned, like the questions of why are taken in account. Stylistics is considered as semi-solid because studies style, like kind of a writings of a particular author, and the figurative devices that had been occurred in a particular text. So Michael Halliday said that literary piece on which stylistic figures or features are applicable should only be analyzed through practitioners or literary people. Stylistics deals with the concept of how language is shaped and formed. Stylistics, being the type or kind of linguistics, deals with vocabulary and sound pattern and how the text affects us psychologically. ये हमने पढ़ा भी था. Nature of stylistics. Nature of stylistics deals with how a specific text shows, delivers meaning, and despite of literary or non-literary theme. Stylistician is a one, इसको judge भी कहते हैं, stylistician who judges the literary text with by different lenses or angles, you can say. This comes under the nature of stylistics. Talking about how nature of stylistics is concerned with the approaches involved in it, how certain rules and regulations are applied. Now here are few approaches such as style as choice, style as man, style as conformity, style as deviation, style or as situation, and style as time. Talking about style as choice, so style as choice inhibits a writer to choose a word replacing a word with a synonym, but certain valid and vivid explicit reason to be given. If I use I hate you or I detest you, I abominate you, so there are few other synonyms who does not relate to the category of synonym because of a particular context is involved. तो context की बात मैं समझा चुकी हूँ पहले भी. Style as a man, how the author background is affected and influenced on his writing. There are a lot of authors who write something that relates with their background or the story, और कभी कभी autobiography things भी आ जाती हैं. It includes background of the author, culture inclination, religion pattern, social and political effects, all can be seen in the author's writing piece of work. जैसे कि शेक्सपियर है, जेन ऑस्टन है, इनकी writings में पता लगता है कि how with what circumstances they have been through. Another we have style as conformity, the rules and strict regulations under which a literary piece is written, which somehow kills the certainty of a writer or a स्टूडेंट, सॉरी, किल्स द क्रिएटिविटी. ऐसा है ना कि स्टाइल एज अ कन्फर्मिटी का मतलब ये है कि कभी कभी हम लोग रिसर्च थीसिस लिखते हैं, उसमें हमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन हमने सिलेक्ट करना है, राइटिंग का जो फॉन्ट है
हमारे जो साइज़ है राइटिंग का वो 12 या 11 या वट एवर इज़ द क्राइटेरिया, उस पर हमने फॉलो करना है। उसके अलावा हमने सब हेडिंग्स डिफरेंट फॉन्ट में लाइक 14 में देनी है, और सब हेडिंग्स हमने 12 में देनी है। तो डिफरेंट क्राइटेरिया है। ये जो कंफर्मिटी है ये हमारा क्रिएटिविटी लेवल डैमेज कर लेता है ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट, एंड आई वुड से ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट, बिकॉज सारे इंस्टीट्यूशंस में ये आया जाता है तो सब स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी लेवल ख़त्म हो जाता है। एवरी लाइन स्पेस विद 1.5 mm एंड हेडिंग्स विद 16 साइज, सब हेडिंग्स विद 14 साइज, एंड अदर सब हेडिंग्स विद 12.5 or I don't know. Style as deviation, a literary piece written without following the rules and regulations without a fixed pattern. कभी कभी कुछ ऐसी लिटरेरी पोम्स होती हैं जो कि वर्स फ्री होती हैं, उसको फ्री वर्स कहा जाता है, जिसमें राइम एंड मीटर नहीं होता, राइमिंग स्कीम नहीं होती। मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न पोइट्री में ये देखा गया है कि जिसमें एक सीक्वेंस नहीं है, तो उसको स्टाइल एज डेविएशन है। डेविएशन मतलब आप लोगों को एक रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाएं और आप लोग उस पर फॉलो ना करें, वो फॉलो ना करें कुछ रूल्स, तो वो आप लोग डेविएट करते हो रूल्स। तो ये ऐसा है जैसे कि एक पोइट है ई कमिंग, तो वो डिविएट करता है ये रूल्स एंड रेगुलेशन। ही राइट्स हिज नेम एज इन द स्मॉल लेटर ई कमिंग, and he used to pay a heavy fine for his deviation. Style as period, so every period in the past had different styles, जैसे कि old English, middle English, modern English, Paradise Lost, Canterbury Tales and even Jane Austen। हर पीरियड के या हर एरा के डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंटली काम किया है अपनी राइटिंग्स को लेके। बोथ ऑफ दीज लिटरी पीसेस हैव 30% इंग्लिश एंड 70% अदर लैंग्वेजेस, बिकॉज पहले ओल्ड इंग्लिश में हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा पहले टफ़ होती थी। इवन अभी भी अगर इफ़ यू टेक आउट द पोम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, इट इज़ कंपोज्ड इन 7 बुक्स। तो वो बहुत टफ़ इंग्लिश है, जिसको हम लोग इवन कहते हैं कि इट इज़ हाफ इंग्लिश एंड हाफ अदर लैंग्वेजेस, बिकॉज दोज वर्ड्स आर नॉट इवन यूज नाउ डेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरह स्टाइल एज पीरियड किसी एरा में डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती थी और किसी एरा में डिफरेंटली। दिस ऑल वी हैव स्टडीड, इट कम्स अंडर द नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। टॉकिंग अबाउट द गोल ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, तो द गोल ऑफ स्टाइलिस्टिक्स इज़ द check the lexis and grammatical level of the written text. The author's way of writing using different syntactic pattern, किस तरह के उनमें syntax यूज़ किया गया है। It deals with thought style, so no two writers can write same and the pattern of each text and the author is different. For example, the syntax, semantic, pragmatic and graphological level of every literary text. Definitely आप दो novels ने उनका उनके जो थीम्स हैं, उनकी राइटिंग स्टाइल्स हैं, जैसे कि जेन ऑस्टन, टॉकिंग अबाउट जेन ऑस्टन एंड जॉर्ज ऑरवेल, तो जॉर्ज ऑरवेल ने डिफरेंटली कंपोज की हैं अपनी राइटिंग्स में। हर इंसान का डिफरेंट होता है स्टाइल। Okay, the style of each author statistician is different, whether applying theories over a text or identifying the uniqueness of it. We do say that every person is different from one another, वरना अल्लाह एक ही इंसान पैदा करता जो कि एक ही जैसे होते। क्योंकि हम different हैं तो हमारे styles different हैं। Talking about uniqueness, तो जब हमारे thoughts different होंगे, style different होगा, and then it comes to uniqueness, तो हम लोग unique हैं in every other way. Every author is unique in his or her way. The style, semantic pattern, arrangement of words, the writing style, punctuation, and the unnecessary capital letters in order to highlight a word which somehow means something else, and that's why highlighted. Different punctuations mostly change the meaning of a given sentence. अभी कुछ punctuations हैं, एक sentence है, a woman without her man is nothing. अब by females it has been punctuated as a woman विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, मतलब मर्द कुछ भी नहीं है औरत के बगैर। और जो मेल्स ने पंक्चुएट किया है, तो अ वुमेन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। तो पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा मीनिंग देती हैं डिफरेंटली, इसीलिए हम लोग अपने सेंटेंसेस में पंक्चुएशंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ माई वीडियो। ये मैंने इसीलिए बनाई बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल couldn't understand my writing, and now you people can even turn on the subtitles so you people can understand if the spellings of sentences or different words
अभी बस ये इतने तक ही वीडियो थी. This marks the end of our video. Thank you so much for watching. I made this video again to help you guys understand what stylistics is and different types and approaches of it. Thank you so much for watching. Meet you in the next video. Allah Hafiz.